Good evening, everyone. My name is Mohit Mohapatra. I secured rank 48 in this year's Odisha Civil Services examination. This was my third attempt and my second consecutive selection in the OCS examination. Last time I got rank 391, and I am currently serving as Block Finance Officer, Kendrapada Block. I was selected in OTAS, Odisha Taxation and Account Service last year. And this year I'm awaiting my orientation. So which service I get, I'll see. Coming about the preparation, मते कहितले कि मेंस पिला माने जे थरको दउछंती तांको किछि गाइडेंस दरकार. I don't think I am a very good person to guide people. Nonetheless, जते मोर किछि भी कम जते कि very less knowledge I have, I would like to share so that कि जदि काहाको किछि help मिली परिबो. And if somebody is in doubt, then they would see me as a help and a friend and a guide, obviously. So first होची हमें मेंस को हमें केमती अप्रोच करिवा. मेंस को अप्रोच करिवा कि हमें we should give importance to the passing papers like English और ओडिया. ओडिया आगुरु बहुत डिफिकल्ट थिला पास करिया पे. आगुरु बहुत लोक एमती फेल ही जाउतले. कहने 30% थिला जनरल कैंडिडेट्स को पाई. एबे इट्स 25%. तो 62.5 रखिया पे पडुची. बट नॉनदलेस आपण तक हल्का रे नेबा कथा नुए. आपण ओडिया प्रैक्टिस करनते, स्पेशली ग्रामर. आउ इंग्लिश तो आई थिंक एवरीवन कैन डू इट. तबरे नेक्स्ट फेज आसीबा में एसे. एसे रे आई थिंक लास्ट टाइम मते 140 मिलितला, एथरो 149 मिलिची. 149 मार्क्स जो जंप हेची, दैट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट आई डिड. फॉर एग्जांपल मते छोटा बेलो नोवेल्स पढ़िया पे बहुत इच्छा, एंड एबे जो प्रिपरेशन 4 वर्ष हो गलानी, तो अलग टाइम रे जतल मते किछि यूपीएससी ओपीएससी रिलेटेड पढ़िया को मते इच्छा होय नै, मो नोवेल्स पढ़े. तो आई हैव डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर्स दैट आई रीड, both fictional, non-fictional, mainly non-fictional, because non-fictional helps in gathering content for essay. तो मु बहुत पढ़ुतली एमती नोवेल्स, और नोवेल्स पढ़ी कि ना मु करे नोट्स करे. माने मते किछि भलो कोट्स मिलिला कि किछि गोटे भलो राइटिंग मिलिला, किछि गोटे थॉटफुल ऑब्जर्वेशन मिलिला, किछि गोटे थॉटफुल एग्जांपल मिलिला. तो मु सेटा कोन करे, मोर गोटे एसे कॉपी अछि, मु एसे कॉपी रे सब लिखे, सब बसी के डिफरेंट को बही हिसाब रे बही अंडर रे. तापरे मु से गोटा सब बही रो कोन मु गैदर कली, मु सेटा करे. फॉर एग्जांपल मैं एबे गोटे नेक्सस पढुथली युवल नोआ हरारी रो. तापरे सेटा भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऊपर मोर बहुत किछि मते नॉलेज मिलला. मु से भीतर किछि बहुत किछि जॉट डाउन करिछि मु. तापरे सेमती आपण करि परिबे सेमती. एंड आल्सो मु आ गोटे करिथली, मु टॉपर्स कॉपी देखिथली. यूपीएससी जो टॉपर्स थिले तांकर सबू केमती से एसे लिखती, तांकर वे ऑफ राइटिंग केमती. एसे एक्चुअली गोटे होची आपण किए केमती लिखुची आपण जानि कि ना आपण गोटे निजर गोटे स्टाइल आपण बाहर कर परिबे. मु सेमती मते जो अनिमेश प्रधान सर अछंती, सेकंड थिले वो ऑल इंडिया सर्विसेज रे. तो तांकर वे ऑफ राइटिंग मते बहुत बढ़िया लागे, बिकॉज इट इज इन्फॉर्मेशन ड्रिवन और इन्फॉर्मेशन हेवी थाए. तो मोर भी एसेटा मोर टिके फिलोसॉफिकल प्लस इन्फॉर्मेशन ड्रिवन. तो मु से दीटा को मु बैलेंस करिया में चेष्टा करे. तो मते तांकर वे बहुत भल लागे, तो मु सेमती लिखे. आउ गोटे होची आपण ऑब्वियसली आपण तो लिखिया पे पड़िबो. फर्स्ट एसे आपण मु पूर्वथर मु टिके बहुत इंपोर्टेंस देइतली लेखा रे. एसे मु लिखितली 5-6 टा. एथर को मु किछि लिखि नथली, टू वेरी ऑनेस्ट. बट मु कोन करे एमती फ्री टाइमिंग रे मोर जते गैदर हे गला पॉइंट्स, मोर सेटा गोटे बिग 400 पेजेस बुक, एसे बुक. मु फ्री टाइम रे मते जतल टिके लो फील हुए, केबे टिके मते टिके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करिया पे हुए, तो माय फेवरेट पास टाइम इज टू रीड समथिंग मोटिवेशनल. तो मोटिवेशनल कोट्स मते फिलोसोफर्स थिंकर्स कर पढ़ी की भल लागे. तो मु सेमती कोन करे, से बही एसे बहीटा को पढ़े, एसे बहीटा को पढ़ी कि आई फ्री टाइम रे एन्जॉय करे. आ सेमती मोर दैट वाज माय स्ट्रेटजी फॉर एसे. तो मु भाबुची कि सेटा कैन माइट हेल्प यू. तापरे होची जीएस पेपर 1 को आसीबा. GS paper 1 is entirely dominated by history, be it we'll start from ancient history, Indian history, medieval history, modern history, world history and Odisha history. तो कौन आपण एमती को आप भाभी परिबेन कि ओपीएससी रे वर्ल्ड हिस्ट्री नाही हमें पढ़ीबानी, बिकॉज लास्ट टाइम भी नथिला. बट लास्ट टाइम वर्ल्ड हिस्ट्री रो भी क्वेश्चन आस्तेला दीटा. सो यू नेवर नो व्हाट विल कम व्हाट विल नॉट. एंड यूपीएससी जे ओपीएससी दोछि से यूपीएससी दो ही थिबो. तो ओपीएससी जतले यूपीएससी दौथे तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िया पड़ो.
आउ आपण मते लगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री न पढ़ले आपण इंडियन रो मॉडर्न एस्पेक्ट क्रोनोलॉजी को आपण बुझिबा टिके डिफिकल्ट हबो एंड फॉर मॉडर्न इंडिया मो टिके बेसी एग्जॉस्टिव हे जाइथिली फॉर एग्जांपल मोर हिस्ट्री वाज अ माइनर सब्जेक्ट ड्यूरिंग माय कॉलेज तो मु एग्जॉस्टिव प्रिपेयर करथिली जोटा मु सजेशन देबिनी अन्य करिया पे आई वुड टेल देम टू स्टिक टू वन सोर्स बट मु पर्सनली कोन करिथिली मु आपन को सेटा कहूची फॉर एग्जांपल मु बैटल ऑफ प्लासी टू पार्टीशन सेटा गोटे पढ़ी आमर सेटा होची शेखर बंदोपाध्यायर तापरे मु पढ़ी इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहार तापरे मु पढ़ी बिपिन चंद्रंकर मॉडर्न इंडिया सेटा भी पढ़ी स्पेक्ट्रम भी पढ़ी तो एते मोर वेराइटी थिला सोर्स बट लास्ट को मु कोन करितली रिवीजन टाइम रे खाली स्पेक्ट्रम टा को ही रिवीजन करे बिकॉज सेगुडा टिके नोबेल पर्सपेक्टिव रे लिखा हिची सेगुडा टिके इंटेलेक्चुअल एकेडमिशियन पर्सपेक्टिव रे लिखा हिची सेटा यूपीएससी प्रिपरेशन पई लिखा हिनी यूपीएससी प्रिपरेशन पई आपनकर लिखा हिची जस्ट स्पेक्ट्रम तो यू कैन स्टिक टू स्पेक्ट्रम आ जदी एडेड आपन किछि माने पढ़िया पे इच्छा होची आपन पर टाइम अछि टाइम परमिट्स यू कैन गो थ्रू दिस बुक्स एंड ऑल्सो तापरे होची आपनकर वर्ल्ड हिस्ट्री पई नॉर्मन लोए मु खाली पढ़ी छी आ गोटे बहुत मोटा बही अछि जवाहरलाल नेहरू का ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री बट सेटा किसी दरकार नाही मु सेटा जेमति पढ़ी थी बट आई डोंट थिंक यू शुड रीड बट नॉर्मन लोए यू शुड रीड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड रीड ज्योग्राफी पई मते टिके डर लागे ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट तो मोर 11-12 रे भी ज्योग्राफी थिला किंतु फिर भी मते डर लागे तो सेति पई मु 11-12 रो तो जति चारटा ज्योग्राफी एनसीईआरटी अछि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेटा आपण पढिबे आ गोटे फिजिकल ज्योग्राफी आसे जीसी लियोन सेटा तो आपण बिल्कुल पढिबे सेटा फिजिकल ज्योग्राफी आपण स्पेशली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव रो बहुत इंपॉर्टेंट आ गोटे अछि फिजिकल ज्योग्राफी पीएमएफ आईएस रो सेटा जदी टाइम मिलुची यू कैन जस्ट गो थ्रू इट once or twice अपन टे conceptual clarity सेतरे भला मिलिबो तापरे आसीबा हमें GS2 I am not a very good person to talk about GS2 because more optional थिला PSIR political science international relations तो GS2 पई मु किछि एमते स्पेशल किछि करि नतली टू द पॉइंट दैट मु किछि पढ़ी भी नाही GS2 पई जोटा ऑप्शनल पई पढुथली आई जस्ट रोट इट ओवर हियर बट मु कोन करूथली ऑप्शनल पई मु कोन करूथली जोटा कि मु GS2 रे भी इंप्लीमेंट कली सेटा होची कि मु अराउंड केस स्टडीज सुप्रीम कोर्ट verdicts around 80 to 100 type of on different issues मु गैदर करथली फॉर एग्जांपल राइट टू प्राइवेसी ही जाओ राइट टू रिलीजन ही जाओ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही जाओ राइट टू प्रिवेसी ही जाओ मु इतरे डिफरेंट सबु सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हो स्टेट हाई कोर्ट जजमेंट्स हो स्टेट गवर्नमेंट कौन करिछि किछि बेस्ट प्रैक्टिसेस हो किछि सिविल सोसाइटी से माने कौन करिछंती तो राइट टू फूड उपरे सिविल सोसाइटी रो बहुत इंपोर्टेंट रोल अछि राइट टू एजुकेशन उपरे सिविल सोसाइटी रो बहुत इंपोर्टेंट रोल अछि तो से माने कौन कौन करिछंती मु सेगुडा सब जॉट डाउन करे एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटीज जे इंपोर्टेंट लाइक बहुत रमन मैगसेसे अवार्डी अछंती जोटा कि माने सोशल फील्ड रे बहुत करचंती से माने तांकर प्रैक्टिसेस तांकर एग्जांपल नै केना मु आई जॉट डाउन तो मु तांकर एग्जांपल पूरा लिबरली आई पुट देयर एग्जांपल्स इन द आंसर शीट्स and mate laguchi that served me well both GS paper 2 nonetheless I am telling you it's such an unpredictable exam mo sei approach purva thara bhi karthili purva thara I got 115 in GS2 paper same approach was this time also I got 150 तो ये जो 35 marks रो leap hela I don't know for what reason it works by God's grace but more strategy एटा थिला कि मु बहुत वैराइड एग्जांपल्स दोउतली वैराइड केस स्टडीज पुट फॉरवर्ड करूथली एंड मु आउ गोटे काम करे कि सेटा फॉर आई वाज डूइंग दैट फॉर ऑप्शनल ऑब्वियसली बट यू कैन आल्सो ट्राई इट व्हेन आई गो फॉर ए वॉक मु कोन करे आई काइंड ऑफ थिंक अबाउट डिफरेंट इश्यूज फॉर एग्जांपल जदि किछि बर्निंग इश्यूज अछि फॉर एग्जांपल गोटे हाई कोर्ट जज कर दिल्ली हाई कोर्ट जज को घरे मिलथिला मनी अनअकाउंटेड कैश तो मु तार प्रोज कॉन्स बेनिफिट ऑफ डाउट कौन दे हबो तांकू तापरे न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू मु सेटा भाबे ब्रेनस्टॉर्मिंग करे आ मोर गोटे बहुत भलो सांग थिला हु इज अ जज आई आल्सो टॉक ऑन वेरियस इश्यूज विथ हिम तो से भी मते बहुत भलो भलो पर्सपेक्टिव्स दे ऑन इश्यूज वी डिबेट अ लॉट
सो मोर से वे मोर टी आर्टिकुलेटिव ओपिनियन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटी मोर डेवलप हो जाता जोटा कि मत इश्यूज मत जो लिखला बेलू मत पॉइंट फॉर्मेशन डिफिकल्ट हो नाला मो सांगे सांगे प्रो रे 4टा पॉइंट 5टा पॉइंट एगेन्स्ट 4टा 5टा पॉइंट कोट एग्जांपल्स किछि एग्जाम अलगा किछि एग्जांपल सेमती लिखिकिना मो गोटे फॉरवर्ड कंक्लूडिंग पॉजिटिव अप्रोच रे मो ताको सारुथिली तो सेटा मोर ऑलवेज फॉर्मेट थिला GS2 पेपर रे आ GS2 पेपर रे एबे आपण तो इंटरनेशनल रिलेशंस नाही आसुनी इट इज ऑल डोमिनेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस रे आपण इट्स अ वेरी डायनामिक गवर्नेंस रिलेटेड टॉपिक्स लाइक रिजर्वेशन हो कि सोशल सिक्योरिटी हो कि गिविंग एटा जो एबे चली छि एबे फ्रीबीज कल्चर ये वो से माने सब कंसेप्चुअल एंड इम्प्लीमेंटिंग क्वेश्चन सब आपण पचारिबे जोटा आपण ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट होछि जोटा आपण एज ब्यूरोक्रेट्स इम्प्लीमेंट करिवे ग्राउंड रे तो हैव ए वेरी मैच्योर्ड ओपिनियन ऑन ऑल ऑफ दोस टॉपिक्स तो आपण सेटा आपण टिके ब्रेनस्टॉर्मिंग कले आपण टिके भलो हबो टॉकिंग अबाउट GS3 मो ताकू 3 इंपोर्टेंट पार्ट्स रे डिवाइड करिया पे चाहूची गोटे होची इंडियन इकोनॉमी और एग्रीकल्चर ता भीतर सब जाउची गोटे होची डिजास्टर मैनेजमेंट आउ गोटे होची साइंस एंड टेक्नोलॉजी दो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो एपे इंपोर्टेंस नाही OPSC रे एंड से माने किछि एमती विविड क्वेश्चन किछि पचारी नाहंती ए पर्यंत बट आई थिंक कि फ्यूचर ऑफ GS3 वुड बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमिनेंट especially in the event of very important developments in the field of science and technology आज गोटे पढ़ुली गोटे सब मेगा लिफ्ट रॉकेट इंडिया लॉन्च कला हेवीएस्ट रॉकेट and of different issues that are coming in front like for example artificial intelligence machine learning internet of things एगुड़ा सब आपन को you have to be very clear on the basics of this topic and say basic of the topics ने गोटे PS अग्रहरी गोटे science and technology book अछि सेटा मु पढ़ी थली मु दिथरा ताको पढ़ी छी just to have conceptual clarity बाकी the thing is that आपण science and technology को cover कर परिबे through paper only paper हो magazines हो monthly magazine जो आछी आपण सेथरे आपण different जो आछी articles different developments आपण से गुडा सब पढ़िबे ता विषय जानिबे सेटा कले ही आपण गोटे वेग आपण के कोनी यू नीड टू बी अ स्पेशलिस्ट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिकॉज आई वाज आल्सो फ्रॉम अ प्योर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड बट एज अ इनक्विजिटिव माइंड आपण कोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोन इंटरनेट ऑफ थिंग्स कोन इसरो रो कोन प्रोजेक्ट चली छी आगु कोन अछि शुक्रयान कोन मंगलयान 2 कोन आउ जापान सहित आमे आ गोटे ये करूछु चंद्रयान सेटा कोन कोन यू शुड नो थिंग्स तापर लाग्रांज पॉइंट कोन एउडा सब आपण न जानले आपण बेसिक आपण हाउ वुड यू बी ए ओवरऑल पर्सनालिटी तो सेगुडा आपण टिके जानिया पे पड़िबो एंड देन disaster management रे I took a long route because I couldn't trust any book at that point of time तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो डिजास्टर मैनेजमेंट रो जो आसे आर्टिकल्स आस्तेला डिफरेंट डिजास्टर तो पूरा से माने हमारा एनडीएमए रो गाइडलाइंस अच्छी ऑन डिफरेंट डिजास्टर लाइक साइक्लोन हो फ्लड हो हीट स्ट्रोक हो सबुथर अच्छी तो मुझे एनडीएमए गाइडलाइंस को पूरा एक्सॉस्टिव वे सेटा गोटे गोटे 30 पेज 40 पेज ई चीज ऊपर मुझे पूरा पढ़ी कि ना तार गोटे सिंक्रोनाइज्ड गोटे शॉर्ट नोट्स करी ऑन एवरी डिजास्टर सो आई हैव ए स्मॉल कॉपी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट तो मुझे पूरा सब डिजास्टर मैनेजमेंट जहाँ जहाँ सब अच्छे मुझे ही पढ़ी थी तो आई डोंट थिंक से गोटे बहुत मत टाइम लगी अराउंड 1.5 मास 3 मास लगी आई हैड टाइम देन बिकॉज मोर 4-5 वर्ष हो गला तो आपड़ सेमती कर आई डोंट थिंक एबे भल कौन नोट्स आसथिबो बुक आसथिबो यू कैन रेफर बट गिवन दैट जदि किछि दरकार पड़िबो यू कैन कांटेक्ट मी आई कैन हेल्प यू विथ दैट आउ गोटे होची इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर इज दी मोस्ट वाइटल एस्पेक्ट आपणकर पूरा एग्रीकल्चर डोमिनेंट GS3 इज एग्रीकल्चर डोमिनेंट तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एगुड़ा सब कौन पाई वो इकोनॉमिक सर्वे पड़े इकोनॉमिक सर्वे रे डिफरेंट एग्रीकल्चर सेक्टर हो इंडस्ट्री सेक्टर हो टर्शियरी सेक्टर हो इंटरनेशनल ट्रेड हो डिफरेंट थिंग्स सब डेटा आसे तो मु बेसिक मु बहुत सारा बुक रो एमती सब जॉट डाउन करी एंड तापरे मु कौन करी कि सर वैल्यू एडिशन करी थ्रू इकोनॉमिक सर्वे आ पेपर रे जहाँ जहाँ किसी इनफॉरमेशन आसला कि किसी नुआ स्कीम आसला ऑन डिफरेंट थिंग्स तो मु सेगुड़ा करे एंड इवन ऑल्सो आई फॉरगॉट फॉर GS1 ऑल्सो सोशल इश्यूज रे मोर कौन थिला कि
I had sociology as an optional in my first attempt. तो मुझे नितिन सांगवान पर गोटे एसेंशियल सोशियोलॉजी बुक अच्छी एसेंशियल सोशियोलॉजी बुक रे मु करी नोट्स ताको मु आउरी गोटे शॉर्ट करिकिना मु ताको जीएस पर्सपेक्टिव रे गोटे नोट्स करी देइथिली आउ तापरे कोन हुए जो सोशल इश्यूज पर्सपेक्टिव रे जो आसे माने किसी टॉपिक्स न्यूज़पेपर रे कि मैगजीन रे मु ताकू सबू माने नोट डाउन करे फॉर एग्जांपल मते गोटे बे नुवा कांसेप्ट आस्तला होमोसेक्सुअलिटी तो आई वाज वेरी इंट्रिग्ड सो आई जॉटेड डाउन इन माय नोट्स तो एमती एमती बहुत सारा एमती कांसेप्ट्स आसीबो नुवा नुवा थीम आसीबो आपण सेटा सेमती लिखि देबे सोशल इश्यूज रे आपण सेगुडा ही डायनामिक जति पर्सपेक्टिव अछि किछि गोटे वुमेन सेफ्टी इश्यूज ऊपर भी किछि गोटे हला चाइल्ड न्यूट्रिशन ऊपर हला ट्राइबल ऊपर हला एसटी एससी को ऊपर किछि गोटे नुवा आसिला पीएम जनजातीय योजना गोटे थिला धरती आबा योजना कुछ गोटे थिला तो सेगुड़ा आपण सब नोट डाउन करेंगे सब नुआ नुआ जहाँ जहाँ स्कीम आसला लेजिस्लेशन आसला आपण सोशल इश्यूज रे सेगुड़ा नोट डाउन करवा सोसाइटी रे सेटा लिखि पारिबे सेम फॉर दिस आल्सो आपण यू हैव टू रीड जो आमर विजन आईएएस रो इकोनॉमी सर्वे आसे ताको आपण करी सेउठो आपण फैक्ट सब बेले लिखिबे और ताको अपडेट करिवे सब्सिक्वेंटली एवरी ईयर तो मो पाखरे अराउंड 50-60 पेजेस रो गोटे अछि इकोनॉमी नोट्स तो ताको मो मेंस पर्सपेक्टिव रे लिखि छै ताको बारंबार रिवीजन करे और एवरी ईयर जेतल इकोनॉमी सर्वे आसला कि बजट आसला कि कोन एमती आसला मो सेउठो टिके अपडेट कर दिए बजट भी मो पूरा बजट पढिनी मो जस्ट तारो फॉर्मल जो ऊपर ऊपर जहाँ अच्छी मो सेउडा पढ़ी दिए और सेटा मते हेल्प करे तो मो सही तीनटा एस्पेक्ट कहबी GS3 GS4 देखो इटा इट इज द मोस्ट वाइटल ऑफ ऑल द पेपर्स एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड डायनामिक एंड पर्सनली मो पाई बहुत ही मते भल लागे से पेपर लिखिया पे बिकॉज आई लव फिलॉसफी मोर टिके फिलॉसफिकल बेंट ऑफ माइंड तो आई काइंड ऑफ डाइग्रेस टू मेनी फिलॉसफिकल इश्यूज एट हैंड तो मते सेटा टिके लिखिया पे भल लागे तो कौन करे मु जी जार मत लगे कि जार एसे भी भल होथो तार GS4 टा भी भल आसीबो पूर्वथर मते GS4 रे 140 मिलथला एतर को 130 मिलिची नॉनदलेस 10 मार्क कमी छी बट आई डोंट थिंक आई हैव गिवन एनीथिंग लेस टू दैट पेपर मोर इनफैक्ट एतर को भल ही जाइतला से पेपर टा तो फर्स्ट होची GS4 टा तो अपन कंप्लीट करबे पड़िबो से पेपर टा बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था से पेपर कंप्लीट करबा ही इटसेल्फ ए चैलेंज तीटा पार्ट को आपण से जो पार्ट ए पार्ट बी ताकू आपण कला बेलू को आपणकर टिके प्रॉब्लम हे पारे बट आपण इनिशियल फर्स्ट आपणकर फोकस शुड बी टू कंप्लीट द पेपर आउ गोटे होची आपण मु जो कहउथली सही सेम कोट्स से जो फिलोसॉफिकल कोट्स मु एसे रे जो ये करथली गैदर करिथली आउ GS2 रे जो मोर केस स्टडीज थिला कि सुप्रीम कोर्ट रो किछि वर्डिक्ट थिला कि इंपोर्टेंट पर्सनालिटी थिला आई लिबरली यूज देम इन GS4 तो GS4 रे मो आंसर गुडा को इट्स अ मिक्स मैच ऑफ करंट एंड फिलोसॉफिकल मो स्टार्ट करी किछि फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव रो किछि एमती किछि देबी किछि इंट्रिगिंग किछि फैक्ट्स ऑन इश्यूज और जो क्वेश्चन थिबो ताबरे आई वुड राइट डाउन थिंग्स तो फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोटे नेक्सस गोटे अछि हमर युवल नोआ हरारी रो सेटा मु एबे सारिली सेतरे मते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऊपर बहुत पॉइंट आसला तो मोर माने जते बेले जे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऊपर आसीबो इधर इन एसे और GS4 रे किछि ऑन टेक्नोलॉजी गुड गवर्नेंस GS4 रे आसीबो गुड गवर्नेंस इज और करप्शन ऊपर किछि आसीबो तो आई कैन बोथ स्टार्ट करिवि मु कौटिल्य लाइक टेस्टिंग हनी कीपिंग हनी ऑन द टंग एंड नॉट टेस्टिंग इट सेटा गोटे आरंभ करिवि नहले फिश ब्रीदिंग इन वाटर तापर आरंभ करी तापर आई गो टू युवल नोआ हरारी से कौन कही हाउ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपोर्टेंट इन कर्बिंग करप्शन तापर माने एमती सब डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव रे मु लिखे कि प्रेजेंट डे रे हाउ कैन वी कर्ब करप्शन एज आई ए थ्रू मीडियम ऑफ टेक्नोलॉजी कि एमती सब तापर अगेन आई विल एंड अप विथ ए फिलोसॉफिकल नोट ऑफ समबडी like Benjamin Franklin गोटे बहुत करप्शन ऊपर से गोटे he gave a very important statement also Abraham Lincoln तो तांको I just give the closing statement तांकर किछि माने sayings देकिना तो मोर सेमती चले एंड मु माने बही जदि आपण मते पचारबे कि बही कोन पढिथिला बही मु 3-4टा पढिथिली बट आई वुड रेकमेंड कि अतुल गर्ग आसे एथिक्स आपण सेटा पढंतु एथिक्स रो पार्ट 1 आछि पार्ट 2 आछि पार्ट 1 टा आपण भलो से कवर करछंती इवन गवर्नेंस एस्पेक्ट भी कवर करछंती आपण अतुल गर्ग रो बही पढंतु
पार्ट बी रे आपण केस स्टडीज जदि प्रैक्टिस करेंगे 3-4टा केस स्टडीज 5-6टा केस स्टडीज एंड इफ यू कम एंड राइट माने मॉक टेस्ट किछि देबे आई थिंक दैट वुड सफाइस। तो यहाँ 4टा थिला गिवन दैट इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम बट मो गोटे पर्सनल गोटे ऑब्जर्वेशन एट लास्ट आपन को देबी दैट पर्सनल ऑब्जर्वेशन इज दैट आपण कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो कि पिला माने भी हो टॉपर्स माने हुआ से माने कहते आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँ दैट इज ट्रू फॉर फर्स्ट टाइमर्स कि सेकंड टाइमर्स ठीक है जहाँ पाखे माने अच्छी माने टाइम किंतु जी बारंबार दई कि फेल होची वी शुड थिंक कि कौन व्हाट इज गोइंग रॉन्ग आप आंसर राइटिंग तो करते 5टा 10टा टेस्ट सीरीज समस्त ऐसे टेस्ट सीरीज आजिकल गोटे फैशन होगा एवरीबडी इज राइटिंग टेस्ट सीरीज तो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग what is going wrong is that input is less output is more तो इनपुट आपणकर जदि आपण डिफरेंट सब्जेक्ट उपर डिटेल डेप्थ नाही आपण सब्जेक्ट को पूरा ओवरली कवर करना आपणकर इश्यूज उपर किछि ज्ञान नाही आपण गोटे बहुत ही मीडियोकर आंसर लिखुचंती गोटे वेग आंसर लिखुचंती दैट वुड इम्प्रेस द एग्जामिनर तो आपण कोन करिया पे पड़िबो यू हैव टू कवर द एंटायर सिलेबस थरोली बारंबार रिविजन करिया पे पड़िबो दैट इज द की मोर फॉर एग्जांपल एथर को ट्रेनिंग रे थिली ट्रेनिंग रे मते टाइम मिलु नथला हार्डली आई यूज्ड टू गेट 2-3 आवर्स एवरी डे कना मो 7टा 8टा बेल को जाउतली ट्रेनिंग आस्तली 6टा बेल को तो हार्डली आई हैड द एनर्जी लेफ्ट इन मी टू स्टडी तो मो 3 घंटा रे आई वाज ओनली रिवाइजिंग जति कि मो शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बनैतली ताको खाली रिवाइज ही करूतली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैवंट गिवन इट सिंगल टेस्ट सीरीज दिस टाइम मु खाली रिविजन ऊपर फोकस कली रिविजन ऊपर मु जति करि पारली एंड आई गॉट 48 रैंक इन 48 रैंक सेव्ड मी बिकॉज ऑफ माय जीएस मार्क्स वो टिके थर को कंपैरेबली पॉलिटिकल साइंस से तो भलो मार्क उठिनी एज कंपेयर टू सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई थिंक सेटा टिके मते मिल जाइतले आई हैव गॉट 258 दिस टाइम इन पॉलिटिकल साइंस टिके बेसी एटले मोर भलो रैंक आस जाई थांता और भलो टॉप 25-20 रे बट नॉनदलेस आई एम नॉट वेरी सैड अबाउट दैट बट आपण यू हैव टू फॉलो ए गोल्डन मीन ऑफ एरिस्टोटल कहते ना गोल्डन मीन कि आप बहुत जीएस को भी ठीक से देखिए ऑप्शनल टा को भी ठीक से देखिए आप एमती भाविए कि ऑप्शनल तो आसुनी मार्क मु कहीं पढ़ी तो ऑप्शनल रे यू कैनॉट अफोर्ड टू गो बिलो 250 तले जदि आप गले ना आप भल रैंक आसबनी और सिलेक्शन उपर भी डेंजर हो टिके तो आप ऑलवेज यू स्ट्राइक कि 250 ऊपर जिते रखिए एंड ओबियसली 290 ऊपर रखिले तो इट्स माने हैट्रिक गोल्डन मीन हैट्रिक तो आप ट्राए करूँ कि ऑलवेज बी ऑन ए सिक्योर साइड ऑप्शनल जिते भल कर पारे इफ यू आर स्कोरिंग लाइक 310 320 330 तो इट वुड कवर अप फॉर द लसेस इन जीएस पेपर आउ किंतु जीएस पेपर को भी आप हल्का रे नियंतुनी जीएस पेपर आई हैव सीन पीपल स्कोरिंग एसए रे 85 80 87 आउ जीएस 1 रे भी बहुत कम उठे 85 90 भी मु देखि पिला मान को रखियार तो सेटा टिके यू हैव टू बी केयरफुल कि आपणकर किछि भी 110 तले तो किछि रहिया कथा नुहे आ जते 150 जदि ऊपर आपण किछि रखि देले 140 ऊपर को 150 ऊपर को यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन तो दिस इज माय शॉर्ट क्रिस्प सेंस ऑफ विजडम टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन मोर I think after mains if they invite me again I'll come and give you brief about interview रे last time मते 170 मिलितला एथर को 158 मिलिछि I think I am in a good position to also guide for interview so we'll see what happens thank you so much